हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शंस हमें गिवन है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड। ऑप्शन बी, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ऑप्शन सी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑफ अ गुड, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ऑप्शन डी, इन्वेंट्रीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। Which of the following is not a function of RBI? आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर not क्वेश्चन में mentioned होगा, right? So you need to be very very careful with reading of the question also, because बहुत बार जल्दबाजी में क्या होता है, हम ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं and we take the wrong answer. So please be very careful when you read the question in your exam paper. यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा RBI का फंक्शन नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, और रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। सो सी, इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, दैट इज करेक्ट। इट इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए। सो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी होता है आरबीआई, सो इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड RBI also regulates monetary policy. So that means the correct answer is option number C, because accepting deposits from public is not a function of RBI. Next question is, which of the following is not a characteristic of a partnership firm? Options हमारे पास यहाँ है, mutual agency, limited liability, sharing of profits, or agreement between partners. Correct answer यहाँ पर होता है option number B, that is limited liability. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर डेट इक्विटी रेशियो इज। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ है, टोटल डेट बाय टोटल लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी टोटल इक्विटी बाय टोटल डेट, ऑप्शन सी टोटल लाइबिलिटीज बाय इक्विटी, और इज इट ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो आपको क्या बताता है? इट टेल्स यू द प्रोपोर्शन बिटवीन बोरोड फंड्स, मतलब कि लॉन्ग टर्म डेट्स, एंड shareholders equity, that means owners funds. So that means borrowed funds and owners fund का क्या proportion है, that is told to you, that is given to you by debt equity ratio. Next question is, which of the following is not a feature of monopolistic competition? Option A, many buyers and sellers, option B, homogeneous products, option C, free entry and exit, or option D, selling cost. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वी हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। बाकी तीनों, दैट इज मेनी बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंड existence of selling cost are features of monopolistic competition. The term double entry implies option A, making two entries in the ledger, option B, recording two aspects of a transaction, option C, posting transactions twice, or is it option D, that is recording in two accounts on the same site? Correct answer यहाँ पर है option B, that is recording two aspects of a transaction, जो कि होते हैं debit and credit. Because every transaction in financial accounting, when we are using double entry system, needs to have one debit and one credit. So double entry का मतलब क्या होता है? Recording two aspects, that is debit and credit of a transaction. अगला क्वेश्चन है, in marginal costing, which of the following costs are considered fixed? कॉस्ट हमारे पास यहाँ गिवन है, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और फैक्ट्री रेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फैक्ट्री rent. Break even point occurs when total cost is equal to total revenue,
total fixed cost is equal to total variable cost, contribution margin is 0, or when sales revenue is 0. करेक्ट आंसर यहाँ पर है when total cost is equal to total revenue. That is the point which is known as break even point, क्योंकि यहाँ पर the company is neither having any profits or suffering any losses. So this point is known as break even point, where total cost is equal to total sales, or we can say revenue. Next question from finance. Question is, the capital structure that minimizes the overall cost of capital is known as option A, optimal capital structure, option B, traditional structure, option C, arbitrage structure, or is it option D, pecking order theory? Correct answer यहाँ पर है option A, that is optimal capital structure. A lot of videos on numerical and theoretical concept of capital structure have been posted on the channel. Playlist ka link I am attaching in the description box. Please take that link if you have any doubt in any of the theories of capital structure. Agla question, unity of command principle is given by options हैं P.F. Drucker, Henry Fayol, F.W. Taylor और Elton Mayo. Correct answer है option B, that is Henry Fayol. And you should also be knowing what is meant by unity of command. IFRS stands for option A, International Financial Reporting System, option B, International Financial Reporting Standards, option C, Indian Financial Reporting Standards, or option D, Integrated Fiscal Regulatory System. Correct answer is option B, that is International Financial Reporting Standards. A contingent liability is option A, always recorded in the books, option B, a liability that is certain, option C is shown as a note to accounts, or option D, adjusted against reserves. So a contingent liability, correct option here is option C, is shown as a note to accounts. Next question, who introduced the concept of scientific management? Options हमारे पास यहाँ पर है Fayol, Maslow, Taylor or Elton Mayo. Correct answer is option number C, that is F.W. Taylor. Next question, the principal audit is an examination of books of accounts is given by option B is the correct answer here. Which of the following is not a function of management? That means इनमें से कौन सा एक managerial function नहीं है? Options हमारे पास हैं planning, budgeting, organizing और controlling. Correct answer is option B, that is budgeting, because it comes under finance. It comes under financial management, so it is not a managerial, a general managerial function ये नहीं होता है, whereas planning, organizing and controlling are the functions of general management, we can say, in an organization. Next question is, law of diminishing marginal utility is applicable when option A, MU, that is marginal utility, rises with each unit. Option B, total utility decreases with consumption. Option C, marginal utility decreases with additional consumption. Or option D, utility becomes negative from the first unit. Correct answer यहाँ पर है option C, that is marginal utility decreases with additional consumption. A very good video is available on the channel where law of diminishing marginal utility has been explained in a very easy and simple language along with the graphical representation. So if you have any doubt regarding law of diminishing marginal utility, go to the description box and check the video. Which of the following is an example of direct tax? Right, so हमें यहाँ पर difference पता होना चाहिए between direct tax and indirect tax. Tell me in the comment section what is the basic difference between direct tax and indirect tax. हमारे पास यहाँ option है option A, goods and service tax, that means आपका GST. Option B, excise duty. Option C, corporate tax. Option D, customs duty. Correct answer is option C, that is corporate tax. अगला क्वेश्चन माइक्रोइकोनॉमिक्स से, इन मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, लेस देन प्राइस, मोर देन प्राइस और ऑलवेज जीरो. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज लेस देन प्राइस. कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट payback period, net present value, profitability index or debt service coverage ratio. So option number D is the correct answer because बाकी तीनों
are techniques of capital budgeting, whereas option D is a ratio that is used for financial statement analysis and it is not a technique of capital budgeting. A private company must have a minimum of 1 member, 2 members, 3 members or 5 members. Correct answer is option B, that is 2 members. Very simple question we have here. The 4 P's of marketing are, option A is the correct answer, that is product, place, price and promotion. The primary objective of WTO. WTO का full form क्या है and year क्या है of establishment, you should be knowing that also. ऑप्शंस हमारे पास यहाँ है फॉर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. ऑप्शन ए रेगुलेट फिस्कल पॉलिसी, प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड ग्लोबली, प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर कंट्रीज और ऑप्शन डी सपोर्ट डोमेस्टिक सब्सिडीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड ग्लोबली. Depreciation under straight line method. Option A remains constant every year. Option B increases every year. Option C declines every year or option D depends on the market value. So straight line method जो आपका होता है depreciation का, वहां पर depreciation remains constant every year. So option A is the correct answer. The term statutory audit refers to option A internal audit by management, option B voluntary audit by NGOs, option C audit required under law or option D audit of informal businesses. So here we have statutory audit. Statutory का मतलब क्या होता है? It is mandatory to be done. So correct answer is option C, that is audit required under law. Next question, monetary policy is framed by Finance Ministry, Reserve Bank of India, Ministry of Corporate Affairs or option D SEBI. So correct answer यहाँ पर है option B, that is Reserve Bank of India. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. ऑप्शंस हैं स्पेशलाइजेशन, इंप्रूव टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज और ऑप्शन डी बल्क डिस्काउंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज. द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग इज assets is equal to liabilities plus capital, assets is equal to expenses plus income, capital is equal to liabilities minus assets or income is equal to revenue minus capital. Correct answer is option A, that is assets is equal to liabilities plus capital. The demand curve in perfect competition is, options are downward sloping, option B perfectly inelastic, option C vertical or is it option D perfectly elastic. Correct option यहाँ पर है option D, that is perfectly elastic. In perfect competition the shape of the demand curve is perfectly elastic. Which of the following is a limitation of ratio analysis? Options हमारे पास यहाँ है helps in trend analysis, so ये तो फायदा हुआ, limitation नहीं हुआ. Facilitates inter-firm comparison, this is also a benefit. And option D जो हमारे पास है helps in performance evaluation is also a benefit of ratio analysis. So limitation यहाँ पर क्या है? Option C, that means ignores price level changes, because ratio analysis में price level changes को consider नहीं किया जाता है, which is a very big limitation of ratio analysis. So that was all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel and don't forget to tell me your score for today's quiz in the comment section.